Hello everyone, this is Chhaya and welcome back our channel English Hike Learn with Confidence. So in this video we will discuss how to pronounce this spelling, and this is THE. So how to pronounce this? So if you pronounce this spelling as the, so this is correct, and if you pronounce this spelling as the, so don't worry, it's also correct. It means this spelling has two pronunciation. First one is the and second one is the. But it depends on situation which is related to vowel and consonants. So if you don't know anything about vowel and consonants, so you will get the link of the video on this topic in my description box. So before starting, if you are new in this channel, so please subscribe this channel for getting some more videos like this, and press the thumb icon for motivators and press the bell icon also, which helps to get all videos notifications on time. So let's start. So जब कभी भी कोई भी स्पेलिंग किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और उसके आगे THE लगे, तो उस टाइम हम इस स्पेलिंग को द प्रोनाउंस करते हैं, लाइक द लैपटॉप. So it's mean if the spelling is started by any consonant and it's followed by THE, so on that time we have to pronounce this spelling as the. Like the wall, the peacock, the lady, the family, the world. And the second pronunciation of this spelling is the. So जब कभी भी कोई भी स्पेलिंग किसी वोवल से स्टार्ट हो और उसके आगे THE लगे, सो उस टाइम हम इस स्पेलिंग को दी प्रोनाउंस करेंगे, लाइक दी अर्थ. इट्स मीन इफ द स्पेलिंग इज स्टार्टेड बाय एनी वोवल एंड इट्स फॉलोड बाय THE, सो ऑन दैट टाइम वी हैव टू प्रोनाउंस दिस स्पेलिंग एज दी, लाइक द एयर, द यूनिवर्स, द इंक पॉट, द ओशियन, द एक्स. बट कभी कभी यही रूल ही हमें कंफ्यूज कर देता है. जैसे कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होती है बट उसकी प्रोनाउंसिएशन वोवल से स्टार्ट होती है, और ऐसा तब होता है तब किसी स्पेलिंग का स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लेटर साइलेंट हो, जैसे आर, ऑनेस्ट, ऑनर. सो ऐसे केस में भी हम THE को दी प्रोनाउंस करेंगे, लाइक द आर, द ऑनेस्ट, द ऑनर. So I hope this video will be very helpful for you to pronounce this spelling as the and the. And that's all for now. And don't worry, we will come back very soon with some more valuable topic like this.